Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Unacademy, the largest online learning platform in India. And before us and with us today is Mr. Abhishek Saraf, who is AIR 8, my friends, UPSC CSE 2019. Awesome performance. Congratulations, Mr. Abhishek Saraf. And from all of us at Unacademy, a heartiest congratulations. Huge, huge applause. Please share with us what are your exact feelings right now, though it's an obvious question, please. First of all, please allow me to thank you for having me here, sir. It's a privilege and an honor to be addressing so many aspirants and to be able to make a positive contribution to the society. So if I'm being completely honest, I would say that when I saw the result, it was a feeling of relief that finally that chapter of my life, what past 4-5 years have been about, it has ended, and it has ended on a positive note. And it has ended on my terms. I'm not giving up based on stress or anxiety or disappointment, but I got the result that I wanted. So it's a matter of relief. Such a nice thing to hear that academic intelligence and humility go together in one person. So it actually deserves another congratulations from all of us. Thank you so much, sir. But if I'm being honest, the credit goes to my family. My mother, who raised me as a single parent. My father passed away when I was just 10 months old. So my mother raised me and my elder brother. And we had the support of our maternal family, my uncle, aunt, and my grandparents. They supported us like anything. And today, if my name has appeared in the list, it's actually their success, even though it's just my name in the list. There's a lot about your upbringing also, Abhishek. Thank you so much, sir. Please congratulate everyone in your family on our behalf. This is such a beautiful thing. Thank you very much. Abhishek, my first question, in fact, whatever question I'm going to ask, I'm going to ask on the behalf of all thousands of learners and aspirants who are watching us. Many queries because of this huge journey. It's a huge, huge war. You know this. It's not even a battle. It's a huge war. So, Abhishek, consider me a completely new aspirant, a beginner at this journey. How do I start? This is the first question. Where do I start this entire journey from? See, so I would say that you very correctly mentioned that it's actually a war, not one battle. So war will have its ups and downs. You will win one battle, lose one battle. So I would advise you to introspect as a beginner aspirant. I would advise you to introspect that why do you actually want to go to civil services? Because this is going to be a very treacherous path. You will face challenges. You will face self-doubt. You will see the depths of depression. I mean, I'm not saying it will happen to everyone, but it can happen to you. And at that point of darkness, what will bring you into the light and what will motivate you to rise up is what motivates you. Why do you really want to go? Yes. So that is the first thing that I would suggest you. Secondly, I would advise you to, if at all you decide to go for it, I would advise you to bring your consistency in your performance, in your approach to your studies. Because this is an exam that you will not be able to clear it if you study for a month and then you lose your pace and then you try to regain it again. So the idea in this exam is that nothing is tough. It is not an intellectually challenging exam. What gets tested is your patience, your perseverance, your consistency, as well as what really motivated you. Because that at the end of the day, that part, whatever motivated you, will bring you out of the darkness and into the path of success. Abhishek, while you were answering this question, one word came to my attention and was consistency. This is something that is, I mean, it's practically impossible for many of our aspirants, I have noticed, to maintain the same level of consistency and motivation all throughout the journey. It may go up and down. Is there any formula to maintain this consistency? Or how do I study 12 hours a day? Or, all kinds of queries come along. So I think you're the best person to answer this for lakhs of aspirants who are watching this right now. So the first thing that I would suggest in this aspect is that what motivated you. See, for me, consistency came from the fact that I like learning new things. I love learning new things, and I learn them from the perspective of application. Like, what did I learn? How will I apply it? Or is it just theoretical knowledge? I don't intend to be a library. I will never be a best library in the world. Neither can I be Google. So what I can be is a thinking person who learned something and then applied it.
And that is what I really like. And the civil services syllabus and the exam is oriented towards application now. So you learn, you analyze it, and they ask you how can it be applied. So that is what motivated me the most, and learning new things every day, whether it be in history, geography, polity, economy, culture, art, science, whatever. That is what motivated me the most. So that is what enabled me to bring in the consistency. Secondly, what people do is that they go in with a lot of energy, and then they end up studying for 7-8 hours a single topic. I would advise against that, because it is human nature to get fatigued, either physically or even mentally. So I would say don't study something for 7 hours. If you are putting in 12 hours a day, like you just mentioned, sir, I would say that divide it into newspaper, maybe 3 to 4 hours, and topic one, whatever it be. You cover the topic one for 3 hours, 3 or 4 hours, and pick another topic for another 4 hours. Like some toppers used to say that they didn't read the newspaper and they covered the monthly concise notes from coachings. I don't subscribe to that. I make my own notes. See, the formula with me is that the slower I study, the longer I retain. And you have to retain things in this exam. So I make my own notes. Secondly, sir, I have realized over the time that you have to take breaks. But over the years, I realized that there is an inverted U curve between the amount, inverted U curve. Okay. Between the amount of time that you spend in a break and the amount of refreshness that you gain. Okay. See, if you are spending under 30 minutes at a break, I think it's optimum. After 30 minutes, if you get to 30 minutes to 2 hours, 3 hours, I don't think, and it has not been my experience, that you will be any more refreshed than what you would have been after the 30 minutes. Okay. So if you are spending 2.5 hours in a break, the 2 hours is wasted. Right. And if you go beyond that, if you go beyond that to 3-4 hours, then you will lose the motivation for the day. You will think that, okay, half the day is gone. So let me just take a break for the entire day and I'll pick it up tomorrow. And then the entire day is wasted. So I would advise the aspirants to take multiple breaks, even though the summation is same, but don't take one break at a long stretch. Take multiple small breaks. Second thing I would tell them is that, see, I perfected this technique of power nap. I actually saw that in a movie in 3 Idiots. The character of 3 Idiots. Okay. All right. Yeah. Okay. The character of Mr. Boman Irani, he used to take power naps in that movie. And while I was watching that movie in the theater, it seemed to me that how can someone sleep in 10 minutes? But I do that. I have been doing that for a decade now. And what I do is that I sleep for 6.5 hours in the night. Okay. And then 3 power naps in the day, 10 minutes each. So it is 7 hours in the day. And that 10-minute break can be very refreshing for you physically as well as mentally. So I would suggest the candidates to divide their day. Generally, people prefer to spend more time on optional. That is fine. There's nothing wrong with it. It's a scoring thing. So you would study for 4 hours one subject, pick another topic for 4 hours, spend 3 to 4 hours on newspaper, and even you can do web surfing or Facebooking, because I used to do Facebooking and I used those things which I saw in the videos on Facebook in my answers. So yeah. In my answers in interview as well as in mains, there are various Facebook pages like World Economic Forum, Interesting Engineering, Mashable, Futurism, Tech Insider. I'm talking from the perspective of more from the perspective of interview than from the perspective of mains. That is because my hobby is watching documentaries about structures, and I've diversified it to watching documentaries. So what I'm saying is that you can take small breaks distributed throughout the day. That is first thing to maintain consistency. Second thing is that, okay, you might be unfortunate. You might not be getting positive results. You might not be seeing your name in the list. And I empathize with you, but and if you are fortunate enough to see your name in the list, it will give you a boost. But if it does not happen with you, what you can do is give yourself small targets every day, accomplish those targets, and give yourself small rewards every day. It will help you feel positive at the end of the day. Look, I have done something good in the day, and you will be able to go to the next day with a positive energy, and it will enable you to maintain your consistency. It can be very small. It can be finishing 40 pages of a book. I'm not saying that do a big thing in a day. Nobody does it. Small contributions every day make a big contribution one day. So that is what I'm saying, that give yourself rewards, give yourself targets, achieve those targets. So that is how you can maintain consistency. One more thing. I'm sorry. Please. Carry. Thank you very much, sir. Yeah. One more thing. The idea is that unfortunately in Indian society, mental health is not emphasized that much. Precisely. I'm sorry. You actually caught me exactly that point. Thank you. Please carry on. Yeah. So, sir, I would say that consistency cannot come without a proper mental framework. Like if I'm feeling depression, if I'm feeling anxiety, if I'm feeling frustration,
then I will not be able to study. I will not be in a happy state of mind. I will not be able to retain what I studied. So do not take it lightly. I would advise the aspirants, do not take it lightly. Develop a framework for your mental health. Develop a support system. It can be your family, it can be your friends, it can be your peers who made it into the services and they can motivate you. It can be anyone really. But do not take it lightly. Be conscious about it. Develop a framework for your mental happiness. And mental happiness once again gets related with the achieving targets daily that I said a few minutes before. That if you achieve a target, you feel positive about yourself. And then you bring that positivity in the next day and it carries forward. So take care of your mental health. One more thing, if I may add, that sometimes in Facebook, we see that, oh, this college batchmate of mine, he's in Australia and he's earning a package of 50 lakhs and see what I'm doing. I'm 25 and I'm unemployed and I could not even clear prelims. Don't do that. Please don't do that. Do not compare yourself with them. What Facebook shows you is the highest points of someone's life. And what you do is that you compare the highest point of someone's life with the lowest point of your life. Obviously, that is going to take a toll on you. Do not do that. If you really want to compare your lowest point with their lowest point. Or if you really want to get a sports analogy, they are a NASCAR car which has won the race, and you are a car that is in the pit. So you must compare yourself with other cars in the pit. Very nice. And when you get to the track, then you might run. So do not compare yourself with those people who are successful as of now, because you are preparing for it. Yes. I had read some time back, I've read that you cannot compare two journeys because everyone has a different phase of his journey. You don't know where he has started and where you have started. There are two different journeys. Exactly. So I think that resonates with what you just expressed. One more thing, in this matter, Abhishek, support structure का क्या role है? I mean, in terms of family, दोस्त, रिश्तेदार, support structure के बारे में, because उसके बिना तो I don't think इतना बड़ा process हो सकता है. I think because अब कभी ना कभी falter करेंगे. Yes, so उस बारे में what do you say about the support structure? I would say कि support structure मैंने बताया था, अभी recall ही किया कि family, friends, peers, कोई भी हो सकता है. And देखिए, दो चीजें मैं कहूँगा बहुत cliched है. Man is a social animal. No man is an island entire of himself. है ना? दूसरा ये है कि हिंदी में कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है और खुशी बांटने से बढ़ती है. जब आप डिप्रेस्ड हैं तो क्या है, आपको किसी चीज का दुख है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, मेरे को याद नहीं हो रहा, मैंने एक हफ्ते पहले पढ़ा था फिर भी याद नहीं, एक हफ्ते में भूल गया, तो मैं क्या एग्जाम में लिखूंगा. किसी चीज का दुख है तो जाके बांटिए उसे. आप बात कीजिए अपनी मम्मी से कि मम्मी नहीं हो रहा, मम्मी बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, फिर से पढ़ ले, हो जाएगा. ये सुनने में बहुत क्लीशे लगता है, बट व्हेन दैट एक्चुअली हैपेंस इट हेल्प्स यू. और नहीं तो सपोर्ट स्ट्रक्चर में आई हैव नो एविडेंस फॉर इट, बट आई हैव हर्ड एंड इट मेड सेंस टू मी, सो आई विल शेयर. जब कोई क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन इज आउट ऑफ फॉर्म, तो व्हाट द कोच या व्हाट द टीम डज इज इट शोज देम द क्लिप्स ऑफ द गेम्स वेयर दे एक्सेल्ड, वेयर दे आउट परफॉर्म देमसेल्व्स. सो व्हाट दे फील इज पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स कि ठीक है अभी आई एम आउट ऑफ फॉर्म बट दिस इज आल्सो मी. वो भी एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है. यू गो टू योर फैमिली, वो दिखाएंगे कोई बात नहीं बेटा, तू ही वो था जिसने ये XYZ एग्जाम क्लियर किया था, याद है. बट इसमें वन हैज टू बी कॉन्शियस बिकॉज समटाइम्स पीपल कैन टेक जॉय इन योर प्रॉब्लम्स. Stay away from such people. Identify them and stay away from such people. Everybody has genuine well wishers, go to them and they are your actual support system. Generally वो family होता है, relatives होते हैं, friends होते हैं, peers होते हैं, तो उनको identify करो और उनसे contact में रहो. अभिषेक, इसी प्रोसेस में एक जो चीज मेजर इंटरनली वीक कर देता है एक पर्सन को, एक एस्पिरेंट को, वो होता है और द डेल्यूज, द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जो एक अवेलेबल है, स्पेशली नाउ सिंस इंटरनेट में आप एक वर्ड सर्च करो एंड मिलियन वेब पेजेस खुल जाते हैं. वो बिना बोले ही वो आपको इनसाइट डिस्ट्रॉय कर देता है कि लगता है मुझसे होगा ही नहीं. सो ऐसा हाउ डू यू टैकल सच अ डेल्यूज, बिकॉज कैन फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार दुनिया में ऐसा समय आ गया है जहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बर्बाद कर रहा है. सो हाउ डिड यू टैकल विद दिस पार्ट? See, I would say it is an evolutionary process. मेरे साथ ये होता था कि जब मैंने स्टार्ट करा था तैयारी तो मेरे नॉलेज बेस बहुत कम था. तो जब when this deluge of information came तो मैं उसमें एकदम इन्वॉल्व हो जाता था, ये सोच के कि मेरा नॉलेज कम है, इन्फॉर्मेशन ज्यादा भले ही बट मेरा नॉलेज कम है, सो आई शुड गेट मोर एंड मोर इन्वॉल्व. पार्शियली मैं कहूँगा ये स्ट्रैटेजी सही है,
but like I said, it is an evolutionary process. Over time आपका knowledge base बढ़ता है and you get to understand कि see this part is what, this is the part that is relevant for me, other is the part that I should just skip and ignore. अब ये कैसे होगा? ये एक रात में नहीं होता. Let me be very frank, ये नहीं होगा एक रात में, ये एक महीने में भी नहीं होगा. बट आप कैसे इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर सकते हैं? ब्लॉग्स पढ़िए टॉपर्स के, ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उनको जाके विजिट कीजिए. हर रैंडम वेबसाइट पे विजिट करने की जरूरत नहीं है, पहली बात. दूसरा बात यह है कि अपने नोट्स खुद बनाइए, उससे आपको चीजें इंटरनलाइज होंगी. आप यू विल बी एबल टू रिलेट थिंग्स मोर इजीली ऑन द व्हेन यू फाइंड थिंग्स ऑन द इंटरनेट कि ठीक है, दिस इज रेलेवेंट, व्हाट आई हैव मेड इन माय नोट्स, व्हाट आई हैव स्टडीड फॉर द एग्जाम, मेरे को समझ में आ रहा है कि ये चीजें रेलेवेंट है, ये पढ़ लेता हूँ, ये चीजें रेलेवेंट नहीं है. ये चीज और ज्यादा रीइंफोर्स कैसे होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ना सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स भी देखिए. टॉपर्स की आंसर शीट्स पढ़िए, हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों कोचिंग्स हैं, टॉपर्स ने खुद अपने ब्लॉग्स पे चढ़ा रखे हैं. आप अगर उनके आंसर्स पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, क्या इनका नॉलेज बेस था. तो उससे आप रिलेवेंट चीजों को फिल्टर करना सीख जाएंगे. कुछ रिलायबल वेबसाइट्स रखिए. और पहली एक और बात, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है. यू हैव टू बी बेटर देन अदर्स. You don't have to be absolutely the best. I mean, you don't have to be a PhD in anything. You have to be better than your peer. That's it. तो किसी भी चीज में आप इतना डेप्थ मत घुसते जाइए कि आप PhD कर लें उसमें. There are 100 sources that will sound relevant to you. But कुछ sources पे खुद को restrict कीजिए, कुछ को consciously जाने दीजिए, but be better than the average. That's it. Exactly. मैं ऐसे both time when I'm teaching on the platform, I tell people, since I'm a lawyer, I'm a stickler for words. बोलता हूँ यार, यूपीएससी खुद ही अनाउंस करे ये जनरल स्टडीज के एग्जाम है, सो व्हाई आर यू मेकिंग इट अ पीएचडी एग्जाम? जीएस बोल रहे वो लोग, दे आर देमसेल्व्स शोइंग इट इज अ जनरल स्टडी एग्जाम. अब ये पूरा दुनिया इस टाइम पर, खासकर इस स्टेज पर आपसे पढ़ेंगे, सच अ सॉर्टेड पर्सन दैट यू आर, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? मतलब एक टाइम तो होगा जो बिल्कुल फ्री होगा, यू नो, एब्सोल्युटली. तो व्हाट इज दैट, यू नो, समथिंग दैट you would like to share कि this is what I do? तो मैं कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं क्या कर रहा होता हूँ? Obviously, you know, कुछ तो होगा आपकी hobby and something like that. जी जी बिल्कुल. ऐसा टाइम आता है, जैसे मोस्टली वो आता है मेंस के बाद, कि मेंस के बाद यू आर एग्जॉस्टेड, यू हैव गिवन योर ऑल, यू हैव रिटन अ 7-day एग्जाम. तो आपको ऐसा लगता है कि अब बस लेट मी अनवाइंड. Yes. तो you indulge in your vices. What are those vices? For me, it is like binge watching TV series. अच्छा, you watch TV series? A lot. That's a refreshing thought. I've been doing that for a decade. Okay, that's good. So एक पूरा सीजन एक दिन में खत्म हो जाता है आराम से. अच्छा. बैठे बैठे देखते रहते हैं. रिफ्रेशिंग होता है. और फिर आई मेक इट अ पॉइंट कि जो सिटकॉम्स होते हैं वो देखिए, ज्यादा सीरियस वाले टीवी सीरीज मत देखिए. Okay. उसमें ज्यादा आपका इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन हो, वो नहीं देखता हूँ मैं, मतलब मेंस के बाद. आई मेक इट अ पॉइंट, बहुत ज्यादा सीरियस मूवीज नहीं देखते हैं. थोड़ा रिफ्रेशिंग देखिए, थोड़ा डम कॉमेडी देखिए. Okay. उससे क्या होता है, इट इज इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ पेस, आपके इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन नहीं होता है. और दूसरा एक मेरा हॉबी है वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट स्ट्रक्चर्स. दैट आई हैव बीन डूइंग सिंस 2010, माय थर्ड सेमेस्टर. व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू आई लाइक टू लर्न थिंग्स, एंड आई एम अ सिविल इंजीनियर. आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम IIT कानपुर. तो थर्ड सेमेस्टर में is when your courses start, your departmental courses start. So I diversified my learning base within the domain of civil engineering though, to classes, projects and events. I organized the National Earthquake Resistant Design Challenge in IIT Kanpur. Okay. And it was the second time that event was organized. So it was a learning experience for me. That is the sole USP why I got involved with that. And with that, I developed a hobby of watching documentaries about structures. Why? Because I'm doing courses in classes. I learn the static stuff. But I should know what is happening on the field as a state of the art exactly. So this was the motivation why I developed this hobby. And it has been with me for 10 years. And this is the hobby that I write in my DAF. Wow. And now since I have stepped out of the domain of civil engineering to the domain of general studies, now I have diversified my hobby to watching documentaries about literally anything. And अब अगर मैं तैयारी के टाइम पे डॉक्यूमेंट्रीज को 45 मिनट की जो होती हैं वो नहीं देख पाता हूँ, तो व्हाट आई डू इज आई यूज फेसबुक. You use Facebook? Yeah. Okay. जैसे आप जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पेज पे, वेरी ब्यूटीफुली दे मेक वीडियोस ऑफ अबाउट 30 seconds, 1 minute, 2 minutes. That does not take much time. That can fit very well in the 10-20 minute break window that I told you about. And you watch a video, and there are so beautiful videos. They cover climate change, they cover society, they cover economy, they cover globalization. You can use those points directly into your answers. Wow. So that is how I mentioned that I not only I was actively involved in social media, I used it for my preparation.
And there are several pages like that. I can list a few pages like World Economic Forum, Futurism, Tech Insider, Interesting Engineering, Military and Defense Insider, Business Insider, Vox. Vox is a good source for international relations, and it will help you in interview as well. And I have used those answers in interview. So that is how I spend my time when I'm not doing anything. Subconsciously, it helps me, not only for the preparation, but also as an aware person. It is such a refreshing thing. मतलब you won't believe कि ये this is going to be a lifesaver for millions of people, because हम लोग को आमतौर पे Facebook का दिखते हैं सिर्फ like and love and वही सब दिखता है. So it's a very nice thing कि this can also be done. It's simple as that. Abhishek, one important thing. You're from IIT Kanpur. Am I Yes, correct? sir. Yes, sir. I had friends in IIT Bombay because I was from Bombay, so I had friends. ये IIT में मैं बहुत ट्रैवल करता था IIT पवई कैंपस में. कि कौन सा दरवाजा है IIT से जो गुजरते हुए धौलपुर हाउस UPSC पहुंच जाता है? I mean, how are IITians so awesome? Because मैंने तो वहां से नहीं देखा था, but this is many of our aspirants actually इसको seriously लेने लग गए हैं कि क्या is it important या is it a mandatory thing कि कोई major reputed university से पास हुआ हो तो ही UPSC में chances होते हैं. I mean, is it anything secret कुछ होता है या is it just a coincidence? Sir, I would not call it coincidence, but I would unequivocally say that it is just not mandatory to have a reputed university degree to be able to clear civil services. In fact, if I could use my experience from back from my days at IIT Kanpur, I would say that देखिए IITs में जो है computer science और electrical वाले जो लोग होते हैं, they are very sharp. जो top 400 rankers होते हैं, they are very very sharp. And I have been part of conversations with these people which I could not even follow. ये बोल क्या रहे हैं? मैं honestly बता रहा हूँ. I'm speaking. Yeah. speaking. Okay. नहीं, मैं बता रहा हूँ. I can even name those people. See, one of my batchmates, Archit Bansal. Archit Bansal. He was close to 160 rank in IIT JEE 2009, and another was Kapil Garg. Both were computer science graduates. Both are placed with the IT companies now, earning hefty packages. They were solving an aptitude problem. I could not even follow what they were saying. Wow. And I kept it to myself. I kept my mouth shut, obviously, for obvious reasons. That was back in 2000, I think 12-13, during my fourth year. So I would say that these people are very sharp, but talking about the rest of the people, they are just hard workers, sincere students. Lovely. And that can be done in any point of your life. When you get sincere, that is when you start achieving. So it is not a prerequisite to be from an IIT or IITN or to be from AIMS to clear civil services. What is a prerequisite is being consistent. And how will you be consistent? I just told you, have to identify your actual source of motivation. As soon as you do that, you will be there. Abhishek, आमतौर पे when you're looking at exams of the stature of UPSC civil services examination, एक I don't know, false sense of grandeur आ जाता है कि मैं एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम भी एक false sense of delusion of grandeur आ जाता है. और स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स बेसिक बुक्स लाइक एनसीईआरटी वगैरह को बोलते हैं इट्स नहीं यार ये नहीं पढ़ना चाहिए, यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग वेरी बिग. So do you have any opinion on this part कि is it a completely wrong thing to do कि सच में कर लेना चाहिए, it doesn't matter, it should be done or something, or did you do these books? First of all, sir, I would like to say कि मेरी philosophy है बातें कम काम ज़्यादा. Lovely. तो मैं यहाँ वहाँ बोलता नहीं हूँ कुछ, चुपचाप अपना काम करता हूँ. So यहाँ वहाँ मैंने अनाउंस नहीं किया था, कुछ नहीं किया था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, चुपचाप काम करता हूँ. And my actions will speak louder than my words. Beautiful. है कि? And I think this will apply very much to civil servants as well. And I will implement this once I become a civil servant, as soon as I join. उसके बाद सर मैं ये कहूँगा NCERTs मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़ी हैं. And what I can say about them, actually वो खदान जैसी हैं. खदान होता है ना, you can extract gold out of them, you can extract minerals out of them. तो आप जितनी बार पढ़ेंगे NCERT, आपका नॉलेज बेस बढ़ चुका होगा. मैंने एक आइटरेशन में पढ़ा, फिर मैं 5 महीने बाद फिर से पढ़ा, तो मेरा नॉलेज बेस तब तक एक्सपैंड हो चुका था. तो आई विल बी एबल टू सी थिंग्स दैट आई मिस्ड द फर्स्ट टाइम. और ये मुझे एक्चुअली फील हुआ 11-12 की एनसीईआरटीज पढ़ते हुए कि क्या ये तो इट इज लाइक अ माइन. तो आई वुड मोस्ट हम्बली रिक्वेस्ट every aspirant to not take NCERTs lightly.
read them, revise them multiple times, especially the old NCERTs. They are the ones that can be sole textbook for a single topic. I can give you examples. Like ancient India में मैं कुछ नहीं पढ़ता था, रामशरण शर्मा जी की NCERT थी, ओल्ड NCERT 11th क्लास की, सीधा वो उठा के पढ़ लेता था. मेडिवल इंडिया में कुछ नहीं करना, सतीश चंद्र जी की NCERT है, उसमें सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ना, किसने किसको हराया ये नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, ये सब चीजें पढ़ लेना है, ये वाले टॉपिक्स हैं, एज इट इज पढ़ना है. ज्योग्राफी में आई वुड से 11th-12th की चारों NCERT पढ़ लीजिए, लियोंग पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ज्योग्राफी एक ऐसा टॉपिक है, उसमें 2 स्लैब्स हैं, या तो आप लोअर लेवल पर रहेंगे जो जनरलिस्ट होता है, जनरल स्टडीज के लिए होता है, और अगर आप ज्यादा लेवल पर बढ़ना चाहेंगे, आई हैव ट्राइड इट मल्टीपल टाइम्स, आई बॉट मल्टीपल बुक्स, अगर आप हाई लेवल बढ़ना चाहेंगे तो आप ऑप्शनल वाली तरफ जाने लगेंगे और चीजें आपके समझ में नहीं आएंगी. तो आई वुड एडवाइज एवरी कैंडिडेट कि ज्योग्राफी जैसे टॉपिक में सिर्फ NCERT पढ़ो, एंड दैट इज इनफ अलोंग विद लियोंग. So I would say कि stick with NCERTs. Almost, I recognize that they are not the exclusive book for every topic, but for some topics they are very good, and for other topics they can give you a very very strong start. Both structure, yes. एक शायर ने बोला था, मेरी कहानी रुदा दे जहां मालूम होती है, जिसे देखो उसी की दास्तान मालूम होती है. तो वो लाइन इज फॉर ऑप्शनल्स. हाउ डू आई चूज माय ऑप्शनल? ये हर एक का क्वेश्चन होता है. How do I choose my optional? When do I starting for optional? And I mean, is there any way of solving this dilemma for everyone? Sir, I would say कि हाँ ये होता है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कि कैसे ऑप्शनल चुने. लोग बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में 360 आ जाएंगे, ले लो. मैथ्स में 360 आ जाएंगे, ले लो. But I would advise against that. रीजन बीइंग 360 आ रहे हैं, वो बात सही है, एम्पेरिकल डेटा सजेस्ट दैट 360 आ रहे हैं. नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट लास्ट ईयर टॉप 5 में 2 लोग एंथ्रोपोलॉजी के थे. जी, तो हाँ आ रहे हैं, वो मार्क्स सही है. पर आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो लीजिए. क्यों? आई हैव एडवाइज यू टू स्टडी a topic for a length of less than equal to 4 hours. Do not take it to 10 hours. But जो सब्जेक्ट आप 10 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं उसको उठाइए. बिना बोर हुए पढ़ सकते हैं, अगले दिन भी पढ़ सकते हैं, उसको उठाइए. रीजन मैं ये बता रहा हूँ, आप 360 सोच के ले लेंगे एंथ्रोपोलॉजी, आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, यू विल डू अ मीडियोकर परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा पढ़ के जा रहा है तो ही और शी विल आंसर द क्वेश्चंस मच बेटर देन यू विल. यू विल एंड अप विद not 300 or 360 marks, you can end up at 240 marks as well. तो एंथ्रोपोलॉजी या कोई भी टॉपिक तब ले जब इंटरेस्ट हो. एक वैलिड कंसिडरेशन होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. हाँ वो बात सही है, अगर मटेरियल नहीं है तो आपको टेक्स्ट बुक खुद पढ़नी पड़ेगी, मटेरियल खुद बनाना पड़ेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो दैट कैन बी कंसिडरेशन नंबर 2. बट पहला कंसिडरेशन सोलली विल बी आपको इंटरेस्ट है कि नहीं. अब मैं अपना खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ कि आई वाज अ सिविल इंजीनियर, हाईली मोटिवेटेड सिविल इंजीनियर. आई क्लियर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज एज वेल राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन. मतलब 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था. कॉन्वोकेशन वाज अराउंड 5th of July. माय एंड सिम्स एंडेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल. और मेरे कॉन्वोकेशन से पहले मैंने इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दे दिया था, जो IES एग्जाम कहलाता तब, और आज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम कहलाता है. आई वाज सो मोटिवेटेड, सो इंटरेस्टेड, मैं प्लेसमेंट्स में नहीं बैठा था, मुझे नहीं जाना था कंसल्टेंसी वगैरह में कहीं, मैं प्लेसमेंट नहीं बैठा. 4th ईयर पूरे साल बैठ के इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करी और कॉन्वोकेशन से पहले इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम दे दिया. एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 6 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. व्हाई? बिकॉज आई वाज हाईली मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट. Or that is the optional I continued with that I continued with in my civil service exam as well. And there were moments of doubt जब मैंने पिछले साल देखा, like I said, कि टॉप 5 में 2 लोग एंथ्रोपोलॉजी वाले हैं और 200 में एक भी नहीं था सिविल इंजीनियरिंग का. तो आई फेल्ट कि ये तो इनजस्टिस है. ये क्या है, मतलब दिस इज शेयर इनजस्टिस किया. मतलब आप एंथ्रोपोलॉजी वालों को ले रहे हैं सीधे उठा के. बट आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद माय ऑप्शनल. वो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, एंड फॉर्चुनेटली माय फेथ हैज पेड ऑफ. तो आई वुड एडवाइज द एस्पिरेंट्स कि आप जिसमें इंटरेस्टेड है उसको पढ़ें, क्योंकि वही आपको इंटरेस्ट मोटिवेटेड रख पाएगा 10 घंटे एफर्ट लगाने के लिए. अदरवाइज मीडियोकर परफॉर्मेंस करके आपका फायदा नहीं होगा. अभिषेक, रोल ऑफ टीचर्स एंड मेंटर्स, गाइड्स, क्या ये है कि मैं अकेले निकल पड़ूं इस जंग के लिए तैयारी की, यहाँ पर है कि मुझे गुरु की जरूरत है, गाइड की जरूरत है? व्हाट डू यू से अबाउट दिस? जी, गुरु की बिल्कुल जरूरत है, मेंटर की बिल्कुल जरूरत है, गाइड की भी जरूरत है. बट गाइड जो है अब मॉडर्न गाइड है. जो आपका क्लासरूम वाला होता था ना कि कोचिंग में बैठा के पढ़ा रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग वाले गाइड्स की अब उतनी जरूरत नहीं है. यूपीएससी हैज बीन ट्राइंग कंसिस्टेंटली टू रीओरिएंट द एग्जाम कि कोचिंग वाला आपको एक जगह तक ले जाएगा, स्टैटिक लेवल तक ले जाएगा. स्टैटिक लेवल पर आपका फाउंडेशन बना देगा, सो दैट यू हैव बीन टॉट टू टीच योरसेल्फ. वाओ.
है कि नहीं? वो आपको फाउंडेशन बना देगा, आपको आईआर पढ़ा देगा बेसिक क्या है। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर खुद पढ़ना है, चीज़ों को खुद इंटरलिंक करना है, अपने नोट्स खुद बनाने हैं, या कुछ लोग नोट्स नहीं भी बनाते हैं, और चीज़ों को एनालाइज खुद करना है, राइटिंग प्रैक्टिस खुद करना है। गाइड क्या करेगा? फाउंडेशन बना दिया। मेंटर क्या करेगा? आप जब डिप्रेस्ड होंगे, सपोर्ट सिस्टम का पार्ट बनेगा मेंटर, वो वाली चीज़ है। और फिर आपको स्ट्रीमलाइन करेगा, आपको बैठा के पढ़ाएंगे नहीं, बट आपका टेस्ट पेपर चेक कर देंगे, बोलेंगे देखो आपका कंटेंट अच्छा है, बट यू हैव टू इंप्रूव योर फ्लो एंड यू हैव टू इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन। वो वाली चीज मेंटर कर देगा। तो मॉडर्न मेंटर मेरे ख्याल से इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्पून फीडिंग वाला मेंटर का जमाना, आई वुड अनइक्विवोकली से इट इज गॉन। यस, सिर्फ सपोर्ट मैकेनिज्म वाला मेंटरशिप। सर इफ आई मे आल्सो ऐड, इसीलिए अब जो ऐसे कोचिंग्स वाला जो मेंटर का सिस्टम होता था, दैट इज गॉन। सो मेंटर कैन बी योर ग्रुप एज वेल। आप किसी वेबसाइट पे आंसर लिख रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे रहे हैं। इट कैन बी ऑनलाइन एज वेल, कि आप कहीं से किसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली टच में है, जो सर्विसेज में लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आपको कंटेंट या प्रेजेंटेशन में मोटिवेट करेंगे। दे कैन मोटिवेट यू बाय टेलिंग यू थिंग्स फ्रॉम द एकेडमी कि देख यार यहाँ पे तो इतना अच्छा हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई वुड गिव वन एग्जांपल। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन वेंट टू लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव अ लेक्चर, एंड आई वाज सो मोटिवेटेड कि यार वहां मुझे जाना है, क्योंकि वहां ऐसे लोग आते हैं क्योंकि मुझे उनकी सुनना है। वो मुझे बताया था वहां पे एक एकेडमी में जो थे उनने, तो वो भी एक मेंटर का पार्ट है। मुझे लगता है मैं आपसे बात करता रहूं ना तो पूरा दिन निकल जाएगा, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑलरेडी विद द काइंड ऑफ सॉर्टेड आउट थॉट प्रोसेस जो आपका है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई एम extremely satisfied with this कि India is in safe hands now, you know, since you were having administrators like you. Abhishek, Thank you so much, sir. It's a privilege and an honor, sir. this is something, Abhishek, I want. What would be your parting message to all the aspirants who are preparing, not only for preparation for the exam, but also for the journey ahead? Because since you come across as such a sorted person, just to put it, देख लिया है with academic performance, what do you want to say to our friends and aspirants who are watching this right now? देखिए, if we are talking in the context of civil service, so मैं ये कहूँगा, देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि you have decided to go to civil service to make a positive impact in society beyond your family and to the country. देखिए, अब वैसे तो मूवी का डायलॉग है, बट आई होल्ड इट वेरी डियरली। रंग दे बसंती में आर माधवन जो थे, उनका जो कैरेक्टर था, उनने कहा था कोई भी कंट्री खुद से ग्रेट नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है। And that is what the role of a civil servant as well as the demographic dividend of the country is. And we are blessed with a demographic dividend that can play a constructive role to make India a developed country. Oh. जी, आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं, आना चाहते हैं, आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कंट्रीब्यूट कीजिए। यू हैव अ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्लेटफॉर्म, यू हैव द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू चैनलाइज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट यू कैन चैनलाइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। बहुत अच्छा है, कीजिए। आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपको सक्सेस मिलती है बहुत अच्छा है, माय बेस्ट विशेस फॉर इट। नहीं मिलती है तो आई वुड लाइक टू कोट आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट द लेट श्री एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था फेल, FAIL, व्हाट इज दैट? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। yes, so failure is not something that can be taboo. It is a first attempt in learning. You attempted, you got a learning and you move up. और END क्या होता है? एंड नहीं होता है, अंत नहीं होता है। इट इज एफर्ट नेवर डाइज। तो मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को ये बोल के पढ़ा किया, देखो बेटा पढ़ोगे कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। सो आई हैव बीन मोटिवेटेड टू स्टडी, आई हैव बीन मोटिवेटेड टू लर्न, कहीं ना कहीं वो यूज हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगा कि देखिए, आज अगर आपका एग्जाम निकल जाए बहुत ही अच्छी बात है, आपका टारगेट था आज का कंप्लीट हो गया, आपके लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। नहीं होता है तो जो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा इस फेज में, यू विल फेस चैलेंजेस, यू विल फेस सेल्फ डाउट, यू विल फेस इनसिक्योरिटीज, यू विल फेस फ्रस्ट्रेशन, यू विल फेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल। वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। वेरेवर यू विल गो, इट विल मेक यू अ टेनेशियस इंडिविजुअल, इट विल मेक यू अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल। तो मैं ये बोलूंगा, कंसिस्टेंसी से पढ़िए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फेलियर से मत डरिए। चाहते रहते तो बस एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा, ये मैंने वर्ल्ड अकाउंट फोरम के फेसबुक पेज पे देखा था। साउथ कोरिया एक्चुअली हैज फेलियर सेमिनार्स। वहां पे क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो अपने करियर में स्टार्टिंग में फेल हुए, स्ट्रगल करे, परेशान हुए, यहाँ वहां पे डिप्रेशन देखा उनने, वो आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, सो दैट द यंग पीपल दे गेट टू रिलेट टू देम कि देखिए ये भी फेल हुए थे, ये भी परेशान हुए थे, और आज ये कहाँ पे हैं देखिए। तो अगर मैं यहाँ पे फेल हूँ, इसका मतलब नहीं है कि मैं वर्थलेस हूँ। आई हैव पोटेंशियल, इफ आई कंटिन्यू विद कंसिस्टेंसी, if I show grit, if I show tenacity, I will be successful.
This is something I think every civil servant, every individual should imbibe, and this is an idea I think which India should bring in as well. मैं बहुत सारे टाइम पे आई मीन जस्ट रेजोनेटिंग ऑन द सेम थिंग, यू नो, जस्ट रिफ्लेक्टिंग, मैं सबको यही बात बोलता हूँ कि जब कोई जिंदगी में नेगेटिविटी हो जाए लाइफ में, तो उसको नाउन में मत डिस्क्राइब करो, ओके? उसको हमेशा क्रिया, वर्ब में डिस्क्राइब करो। से नाउन में आई एम अ फेलियर ये वर्ड मत यूज करो, से आई फेल्ड, इट्स ओके, ओके, बट नेवर यूज इट एज अ नाउन। और जो भी चीज पॉजिटिव है उसको अचानक नाउन में बोल दो, no, I won, you know, so it's because vocabulary changes your thought process completely. So Abhishek, I cannot even express in words, you know, how delighted I have been and how delighted this conversation was. We are very, very thankful for you to have given us your precious time. And I'm sure it will go a long way in inspiring our friends and aspirants. I wish you all the success in your life and all the more and more glory, and make India proud. Jai Hind, Abhishek, and congratulations to you and your family and everyone. Thank you very much. Thank you very much, sir, for having me here. It was a once in a lifetime opportunity, I could say, to be able to help the aspirants so much. And I would thank the God Almighty that He blessed me with this platform as well as with the success that He gave me, so that I could make a small positive contribution to the society, sir. And I would most humbly thank you for all the compliments that you have showered upon me, sir. It came from the heart. It came from the heart. I'm a lawyer. I don't lie outside court. But it was very nice. Thank you, Abhishek. Thank you. God bless you. Congratulations. And Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir. Jai Hind, sir. Thank you. A very huge opportunity. So please, I am again welcoming you to comprehensive course on international relations ka course, which is starting on August 7, 2020, and comprehensive course on polity and governance, which is starting on August 17, 2020. Remember the code SIDLIVE. You will get an immediate discount. Those are my friends जो 2020 में या 21 में attempt कर रहे हैं, बच्चे take a 12-month course, right? ये 44,000 का ये course है, 44,000 rupees तुम्हें देने नहीं है. क्यों sir? Because तुम कोड यूज करोगे SIDLIVE. यूज माई कोड SIDLIVE, SIDLIVE, and 39,600 में ये कोर्स तुम्हें मिल जाएगा. Those are my friends जो 2021 में, 22 में, 23 में अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके बियॉन्ड भी है, तो बेटा टेक अ 24-month कोर्स, 2 साल का कोर्स 64,000 में अवेलेबल होगा. यूज माई कोड SIDLIVE, SIDLIVE, and you will get an immediate discount of 10%, and 57,600 में ये कोर्स तुम्हें मिल जाएगा. Thousands and thousands of aspirants मुझसे इसी कोड को यूज करके मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड द काइंड ऑफ एसोसिएशन हमारा एक दूसरे के साथ है, बिकॉज आई गिव माई बेस्ट टू मेक श्योर कि तुम्हारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए. यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, माई फ्रेंड्स. टेक अ वाइज डिसीजन, बट टेक इट नाउ.